Good morning to all of you. Today we will discuss about the excretory system in insects. What is the excretion? This is the fundamental definition of excretion, that elimination of nitrogenous waste from the body is known as excretion. In insect, the removal of waste product of metabolism, especially nitrogenous waste and nitrogenous compounds from the body of insect, is known as excretion. Excretion process helps insect to maintain water salt balance and thereby physiological homeostasis. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर ही हम डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं. किसी को हम एमिनोटेलिक कहते हैं, किसी को हम अमोनोटेलिक कहते हैं, किसी को हम यूरियोटेलिक कहते हैं और कुछ को यूरिकोटेलिक कहते हैं. और इसी प्रकार से जो किडनी होती है उसके भी अलग अलग प्रकार हो गए. कुछ को हम मीजो प्रोनेफ्रोज प्रकार की, किसी को आर्कीनेफ्रोज प्रकार की, प्रोनेफ्रोज प्रकार की, मीजोनेफ्रोज प्रकार की और मेटानेफ्रिक प्रकार की. यहाँ इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात हम करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स. मार्सेलो मेलपिगी नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम के आधार ऊपर या उनके सम्मान में इसका नाम मेलपिगियन ट्यूब्यूल दिया. ये स्ट्रक्चर्स कहां पर उपस्थित होती हैं? सामान्यतः हम जानते हैं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं. These are the thin blind ending tubules originating near the junction of midgut and hindgut, predominantly involved in regulation of salt, water and nitrogenous waste excretion. The number of Malpighian tubules varies in different insects. Number 2 in scale insects, number 6 in Ordonata, number 16 cockroaches, 200 in grasshoppers, and absent in aphids and collembola. Here is the mesenteron. This one is the ileum, colon and rectum. These all three parts are belongs to hindgut. हम कह सकते हैं कि this part which is the junction of the midgut and the hindgut is known as the, which contains the tubules are known as Malpighian tubules. This part from the mouth to the this one, जहां से गैस्ट्रिक शीकर निकलते हैं वहां तक का पार्ट फोरगट कहलाता है, जिसमें प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड वेंट्रिकुलस ये सब पार्ट आ जाते हैं. यहां से और इलियम वाले पार्ट तक ये वाला पार्ट जो है ये वेंट्रिकुलस कहलाता है, जिसे हम मिडगट कहते हैं. और यहां से लगा के पीछे तक का पार्ट और ये जो कहलाता है इसको हम हाइंडगट कहते हैं, जिसमें इलियम, कॉलन और रेक्टम 3 भाग होते हैं. रेक्टम ओपन थ्रू द एनस आउटसाइड द बॉडी.
Here is the part of the junction of the foregut or midgut and the hindgut. This junction से हम देखते हैं कि ये ओरिजिनेट हो रही है Malpighian tubule. There is a blind structure. This one is also blind structure. तो यहाँ पर इनके नंबर हो सकते हैं, कहीं पर 2 मिलते हैं, कहीं पर 60 मिलते हैं, कहीं पर 200 मिलते हैं, कहीं पर जो है नंबर इनके वेरी करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो देखने को मिलती हैं वो Malpighian tubules उपस्थित होती है। नंबर दूसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नेफ्रोसाइट्स सेल्स hematologic and pericardial cells. Number third one is the fat bodies, a loose and or compact aggregation of cells, mostly trophocytes, suspended in the hemocoel, responsible for storage and excretion. Poinocytes, these are specialized cells of the hemocoel, epidermis, or fat bodies with many functions. One of the function is excretion. Number 5, integument, the outer covering of the living tissue of an insect is integument. Tracheal system, the insect gas exchange system comprising trachea and tracheoles. Rectum, the posterior part of the hindgut, physiology of excretion. तो ये सब जो पार्ट थे वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में इंसेक्ट में। What is the physiology of excretion? Nitrogenous excretion. Terrestrial insect excrete waste product as uric acid, and certain of its salts are called urates, which were water insoluble and require less amount of water or waste product removal. This type of excretion is known as uricotelism. Second thing, in aquatic insects, ammonia is the excretory product which is freely soluble in water and requires more amount of water for waste product removal. This type of excretion is known as ammonotelism. Cryptonephry, the distal end of the Malpighian tubules are held in contact with the rectal wall by the perinephric membrane, which is concerned either with efficient dehydration of feces before their elimination or ionic regulation. For example, adult Coleoptera, larval Lepidoptera, and larval Symphyta. Here's the midgut part. Here is the hindgut part. Or this one is the junction of the midgut and hindgut, where these Malpighian tubules are present. These Malpighian tubules, which are suspended into hemolymph, or the hemolymph contains salt, uric acid, and water, which are absorbed by the Malpighian tubules and pour into the hindgut. It will be eliminated out through the anus, mostly uric acid and feces. Salt and water are reabsorbed in the
hindgut, especially in the rectum. There is the midgut. These are the Malpighian tubules. Here is Malpighian tubules. This one is the distal end. Or here is the surrounding these Malpighian tubules. In this region, hemolymph is present outside the or inside the. Now the nitrogenous waste, water, amino acid, sugar, salts, all these things are absorbed by the, ये सब absorb होती हैं through Malpighian tubules और Malpighian tubules के अंदर ये enter कर जाते हैं all these things और with the help of Malpighian tubules these products come into the hindgut, lumen or and colon, ileum and colon. ये काम इस Malpighian tubule वाले से भी हो रहा है, सेम थिंग इस Malpighian tubule से. आगे चलते हैं तो कॉलन के बाद ये these are the rectal pads. इसमें रेक्टम आ जाता है और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेस, वो यहाँ से और इसमें क्या आ रहा था, वाटर आ रहा था, एमिनो एसिड्स आ रहे थे, शुगर आ रहा था, साल्ट आ रहे थे, ऑल दीज थिंग्स आर absorbed by the Malpighian tubules which are eliminated out from the rectal pads outside the hemolymph. All these things, reabsorption of water, amino acids and sugar and salts, ये वापस से reabsorb कर लिए जाते और फिर से इनको हेमोलिम्फ में डाल दिया जाता है और केवल नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से फिर बाहर निकलता है. Only the nitrogenous waste and other excretory products are eliminated out through the anus. The function of Malpighian tubules, excretory in function, mainly concerned with removal of nitrogenous waste. The other accessory functions are as follows. Number one, spittle secretion of the spittle bug, light production in Boletophila, silk production in larval neuropterans. Storage excretion. The excretory waste material are retained within the body in different sites. Uric acid is stored as urate in the cells of fat body. For example, in an American cockroach, uric acid is stored in the body wall, giving white color. Red cotton bug, uric acid is stored in the male accessory glands to produce the outer coat of same spermatophore, which is excreted during copulation. Uric acid is stored in the wing scales, giving white color to the parent butterfly, waste products of pupal metabolism. Mechanism is stored and released during adult emergence. So this is all about the excretory system in insects. Thank you very much. Thanks a lot.